TheDiviShow. ये बहुत डिफिकल्ट है. अरे भाई मेरे को आगे जाना है. So please cut that. वो ना बंद हो जाता है यूजुअली 20 मिनट में. पता नहीं आज क्या ऐसा हो रहा है. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द दिवी शो. यूर ऑन एपिसोड नंबर 30. मैं आज अपनी एक फ्रेंड को यहाँ लेके आ रही हूँ मेरे पास, जिसका मेरे को बुलाने का ऑब्वियसली बहुत टाइम से मन था. बट वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं. शी इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग बिकॉज शी नोज हर क्राफ्ट सो वेल. And I wanted to personally be polished and finished in my project to make sure that she comes on board. तो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस होने वाला है for me and for you guys for sure. We have called Heena from the HeenaAgrima brand. It's a very famous brand in Jaipur and they basically work on sustainable clothing. इनका natural dyes का they have a very beautiful relationship with flowers. और इन्होंने natural dyes की help के साथ इतनी सारी clothing, इतने सारी supplies, इतनी सारी workshops की हुई हैं to share that skill with people and to ensure that these practices help a lot of other people as well. They believe कि कोई भी कपड़ा अगर हो उसका स्टार्ट से लेकर एंड तक उस प्रोसेस के बीच में कोई एक चीज़ भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए. सो सम वंडरफुल फिलोसफीज आई एम गोइंग टू discuss all of this with her, so stay tuned and I'll see you in the end. Bye. Hi guys, welcome. Thank you. Glad to be here. क्या हाल चाल है तुम्हारे? Heena is busy working on her new collection. What about Agrima? Well, I am just waiting for her to finish the collection so I can finally get on my work. Yeah. तो Heena सारा creative aspect देखती है. Yes. और Agrima, you handle everything, executive, admin, That's operations, true. Yeah. everything. तो कैसी रहती है अभी? How is the new collection coming in? Well, it was मतलब क्या बोल सकती हीना बोल सकती है. नहीं, अग्रिमा बोल सकती है. माइक नहीं दिया तो इसका ये मतलब नहीं है तो बोल नहीं सकती. मेरी आवाज बहुत बुलंद है. माइक की जरूरत नहीं पड़ती. The new collection is going well because this is the first collection जहाँ हम लोग क्राफ्ट को जो बाहर की कम्युनिटी से हम क्राफ्ट कराते हैं एंड जो क्राफ्ट का इवोल्यूशन हम अपने स्टूडियो में हमने पिछले 2-3 साल में जिन भी क्राफ्ट्स पे वर्क किया है, वी ऑलवेज मेड श्योर कि हम उनको कभी भी डायरेक्ट पिक नहीं करें बिकॉज वी बिलीव इन द आइडिया दैट इफ वी पिक इट डायरेक्टली देन देयर इज नो स्कोप फॉर ग्रोथ. And craft at the moment in India is at such a stage that it requires immense growth, fertilizers of design, and so much of work is required in that case. So this is the first collection where we're amalgamating craftsmen, women, and also people from our studio like designers, and also the craft people that we've trained under contemporary craft coming together. And I am really hoping the collection has a great balance of that, whatever we're trying to achieve at the moment. I can't say anything right now because it's still under construction. Regarding to अभी भी sketching वाले ही stage पे है. And नहीं, sketching से हम थोड़ा आगे आ गए हैं. I mean, yeah, we're getting there. We're somewhat at the हो गई है. prototyping stage. Yeah, and फैशन में बहुत सारे stages होते हैं apparently. सारे उसमें होते हैं. I can't जिससे कि फैशन में होते हैं. But सबके फील्ड में जो stages आपको क्रॉस करने पड़ते हैं. So finally, the collection that people see on the website is the ultimatum of what we've done over the past 3-4 months. I am a big fan of your swatch mood board. वो बन चुका है? वो बन चुका है. That's done. क्या मुझे दिखेगा ये? अभी तो नहीं दिखेगा. In a while. Not that long. We just have I think 2 or 3 weeks. And then we are going to get the collection on board. What are your expectations with the new collection?
Well, that's a tough one. I mean, honestly, we don't really expect anything because, we feel that every time we make a collection, we're learning more and more. So that's for sure. But yes, this time we are expecting something that, in most cases we feel that people are like, that you're supposed to make your clothing more bling. I'm not supposed to say this, but yes, that's a constant review. So we're trying to get that element where people feel that these kinds of clothes can be worn more on the occasion wear as well, and it's not just something that you wear for something in the middle like lunches or brunches So or we are something. trying to segregate HeenaAgrima at the moment in daily wear and occasion wear. Yeah. We never want to go into couture. That's what we've realized over the past 2 years that we worked with each other also and with the team as well. Couture matlab wo high end fashion like people like Rahul Mishra are doing. That's all couture. So we don't want to do that. We want to stick to occasion wear and a little bit of fun daily wear where people can pick and be like, okay, today I feel funky or today I feel happy, so I would want to wear this. And that's what I want to aim with my clothing, that it should make people feel happy with the colors or with the techniques or the texture, whatever. मेरा content भी feel good होता है और मैं चाहती हूँ like in layman language if I say I want my clothes also to be feel good clothes. You are done with the Marigold and Oasis. I think these are the two collections that you have launched. So इस पे कैसा response आया? Well, Oasis was the first one that we did, and it was a very introductory collection. हमें कोई idea नहीं था हम क्या करते. So initially, HeenaAgrima's plan was that we are going to make creative shirts. So we only stuck to shirts at that point of time, and eventually we realized that we want to grow in a certain more directions as well. So Oasis was something which was focused completely on shirts and the different textiles that we had acquired and learned over the period of time. Then Marigold High came in, and that was like a full-on Marigold blast. That is the reason why we called it Marigold High. And also because Marigold has been very important in all of our elements and details. Marigold is like culturally associated to us. Both of our cultures, where we come from. हम दोनों के घरों में पूजा में मैरीगोल्ड यूज होता है. In fact, everyone's. मतलब वो नहीं होता कहीं पे रोज यूज होता No, है. so the elemental aspect in this Common is factors जो हम दोनों के तो करते हैं. घर में मंदिर है, अब मंदिर में रोज या तो एक गेंदे की माला आएगी या एक गुलाब की माला आएगी. So we started this process and practice that we started collecting that mala that is coming each day, and that is the same flower that is being used on our clothing. So it is like a like a temple collection. Because of this we got into farming also. तो हमारा सबसे पहला फूल उगाने वाला ही मैरीगोल्ड होता है, क्योंकि मैरीगोल्ड आसानी से उग भी जाता है. इट इज नॉट अ स्पीशी दैट्स नेटिव टू इंडिया, बट इंडिया में आने के बाद इतना पारिवारिक बन गया है ये फूल. मतलब उसने अपनी एक जगह बना ली, एक वैली बना ली. इट कम्स फ्रॉम मेक्सिको एंड I don't know, I think marigolds are like super Indian now also. People look at marigolds and they can associate with India as well. And I think ये जो एक part है, जो एक journey है उस flower की from Mexico to India, वही journey मैंने और अग्रिमा ने अलग अलग life के aspects में बहुत जगहों पे की है. Same तरीके से. Are you talking about going to Milan together and then coming back to Going India? to New York together, to Milan together, traveling the world together, and her family is also very open to travel. My father, because he was an exporter, तो मतलब उनका तो सारा व्यापार ही अमेरिका में हुआ है. तो बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस भी देखे हैं. तो मैरीगोल्ड से उस वे में भी एसोसिएट कर पाते हैं कि ये भी ट्रैवल करके आया है, इसने भी इस जगह को अपनाया है, अब मतलब बन गया कुछ. सो व्हेन वी गो आउटसाइड आल्सो वी डोंट फॉरगेट आवर रूट्स, बट वी टेक समथिंग फ्रॉम देम एज वेल. एंड आई थिंक दैट्स द ग्रोथ वी एसोसिएट वेरी स्ट्रांगली विद द मैरीगोल्ड फ्लावर.
Also, diaspora is a very big element. That's where diaspora came in. Yeah, diaspora is something which is like आप कहीं और के native हो, but आप कहीं और रह रहे हो. Roots आपके कहीं और के हैं. जैसे all the Indian Americans that are living in the United States. Yeah. They are all you can consider that as a South Asian diaspora. Yeah. Okay, so we really believe in that because हम लोग नहीं है यार. We like not. मैं ये नहीं कह सकती कि हम प्रॉपर इंडियंस नहीं है, बट हम में थोड़ा कल्चरल डिफरेंस है. हम ज्यादा एक्सपोज हुए हैं बाहर के कल्चर्स से, सो वो चीज ग्रास्प करी है हमने. एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक क्लोज टू आवर एज और आवर एज, इफ यू लुक एट देयर वर्क, इट्स वेरी अमैलगमेटेड, इट्स वेरी diasporic work. So I really connect with all these things, like cultures amalgamate and all of that and la la la. So Marigold plays a very important role when we do any collection. Marigold is there. We don't skip on that ever. Yeah. Wonderful. Let's go back on your journey. ये start कैसे हुआ? You were together since MGD times. कब से जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? Second standard. First standard से जानते हैं. But we became friends when we were in 9th grade. That is actually that's where it started. So मेरे ऊपर सड़े हुए एप्पल का जूस फेंका था. Well, that was another story. That was another story. उससे पहले तक हम दोस्त नहीं थे. So it started from there. We became very good friends in 9th. And of course अब 9th में आपका एक section same हुआ है, तो वो 10th 11th 12th same ही रहता है. So we kind of decided to get on the same tracks eventually. 11th में we took up humanities, we took up commercial arts. Then college का time आया, तो there was a certain direction that okay, we have to go in design. Then finally it came down, okay, we're going to go into textile design. Alright, but of course that did not go as planned because nothing has went as per plan. That is one thing I should we should highlight. So textiles did not happen for us because the college decided to shut down the stream when we had to begin. So we completed foundation and then we were dropped into the fashion design course. So we started with fashion design in our bachelor's. But दोनों को एक वो point कहाँ मिला where design was the thing that you both wanted to pursue? She tried for science. Yeah, I mean, for me it was like a long-term thing that I'm going to be a doctor. Okay. So I was never the creative one. Yeah. And I never wanted to be, this design person. मेरे को ज़्यादा design समझ नहीं आता. I think that's why even today my tasks in HeenaAgrima are more oriented towards management and implementation and execution. Yeah. She understands design products. She doesn't want to design. So there's like a difference. Yeah. I think it's not my direct interest. Yeah, it's not her interest. Right. That's what I would say. Yeah. So, and for her, I mean, because she had always been into, the fact that she loved to be on the creative side, loved to experiment, do all sorts of things. So she was always the one who was like, अच्छा ठीक है ऐसा करते हैं. But where her area stopped was कि अच्छा चलो ठीक है, this is the plan, but अब execute कैसे करना है. So I think that's where we kind of merged together, and she was the creative aspect of it. And for me, it was more like, okay, you create and then I will see how we can practically look at it. Right. Then Pearl happened. Well, that was, Pearl was when we did our bachelor's, so that was 2014. 4 years in Pearl, and then we decided that, okay, through the way, of course, we started traveling already. So we went to New York in 2015. We went to Milan in 2016. We tried to shift to Parsons in 2015 when we went to New York. But we both realized that it's too commercialized for us. Okay. New York is very fast paced, and everyone wants to become something really big. And we both were like that, we want to become something, but big and all we'll see. हम लोग खुद भी discover ही कर रहे थे यार, we did not know. So committing to that level of life, I think अगर हम रुक जाते
शिफ्ट हो जाते तो आज हीना अग्रिमा ऐसा तो नहीं. ऐसा नहीं. Yeah, I mean, I think if we would have been in New York, We then would not have worked only together because we we would would have to have like done jobs. a job. Yeah, Karni we were more. padti. We would have been into jobs at that point. Right. Well, even in Milan, that was the plan initially. That so for our masters, when we went to Milan, that was 2 years. Yeah. So at that point, we had this in mind that okay, when we finish our final semester, we're going to apply for a few internships, you know, to gain experience, to see how the industry works. Then COVID came as a When blessing. yeah, well, I mean, I We think never came back because of COVID. Oh. We just came back to meet our family. Yeah. It had been But very you long. couldn't go back. yeah, Yeah. I mean, it's been from 2020 till now that Yeah. we've We've not been to Italy. yeah. Degrees आ गई. नहीं collect करी. अभी तक तो नहीं करी. But We soon. don't even ask. या डिग्री से हम सीखना जाना है हाँ. कॉलेज. Yeah. डिग्री की कीमत तब पता चलती है जब आप उसको अपनी लाइफ में एक्चुअल में I implement mean, करते I हो. would say the degree exists, Yeah, but but it's in- just not here. No, it exists in our veins. What we learned in our muscle memory. No, I mean literally also because of course we paid for it. You had to mention that. Yeah. Yes. हाँ, तो अब जिस पोजीशन में हो आफ्टर ट्रैवलिंग आफ्टर आई थिंक काफी टाइम से तुमने ट्रैवल भी नहीं किया है आफ्टर दिल्ली एंड यू गाइस द लास्ट टाइम वी स्पोक यू गाइस वर मिसिंग इट दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ वेयर यू आर आउट देयर एंड एक्सप्लोरिंग बट नाउ यू हैव फाउंड लाइक योर स्वीट स्पॉट एंड यू आर एक्सप्लोरिंग देयर. वो लाइफ कैसी है, द स्लो लाइफ, द It's not जयपुर slow. लाइफ? We anticipated it to be slow, but it's not slow. I think it's more like if we were not here, Yeah. then things would have been more dependent on us and us carrying out all of those tasks. Well, whereas here, it's the other way around. But still similar because there's a whole working force that you have to, you know, Build. gather, build, and work with. But I don't know, I've enjoyed that part a lot. Yeah. Actually, because that has given more meaning to Heena. Yeah. Because when we started off, we wanted to work very individually as like fashion artists and fashion textile artists or whatever. Teach people and just be like, and happy and all of that. Then eventually, when we started training the girls who work for us, Yeah. Anu, Tanu, Poonam, Pooja, these four girls have been there since the beginning. And when we started training them, we realized that this is so fruitful. It feels so happy that you've contributed to the society, not on a superficial level, that somebody does not have to validate us. We have already given the craft of natural dyeing to these people Yeah. who will, they know. That was the idea, right? That the craft should not die to the person who's doing it. Yeah. It should go ahead. Yeah. And when we teach people, it goes ahead. And that's why the philanthropy to teach people came in. Usse pehle tak we were doing workshops because we wanted to sustain. Yeah. But now the idea of doing workshops is to Share that skill. exactly to share that skill, because if we contain it within us, then हम तो एक दिन कभी ना कभी तो we will not be in charge of HeenaAgrima. Like hopefully somebody else will take over, somebody else will run it. But that's because we gave something to it, Yeah. and somebody else can get jobs through it. My dream is that this should not be limited to us. Right. It should go to the world and people should circulate it within them. So if they have an ideology to work upon, they can build a very big building on that. We are setting the roots. Now later on what happens we'll see. But this is what I have enjoyed the most. Building it Yeah. was the most empowering thing that I've ever done for myself. And I don't know about her. I'm sure it's the same. No, it is pretty much the same Yeah. because, you know, getting the whole thing together and then every day we're learning something new, every day we're growing. Every day we get stuck. Yeah. We're like, this is what the hell is this? Yeah. And then every you day, push through. yeah, and then we are like, no, we have to push through. And I don't know, dude, like the second collection I feel it went very well.
Yeah, it went We very kind of well. sold out. I called Heena a couple of days back and I'm like, I want to source some stuff for a photo Why shoot. कुछ था ही And she's नहीं? like, nothing is left, everything is gone. I did not have anything to give. मेरे पास literally वो जो हमने पहली बार कपड़े जो बनाए उनकी सैम्पलिंग पड़ी थी, उसमें से भी कोई आया था एक क्लाइंट, तो वो बोलता यही दे दो. मैंने कहा भाई ये तो बटन भी नहीं लगे हुए हैं इनमें तो. So I just did not know what to give you. क्या देती मैं? When was the point when you guys sat down and decided कि क्या value systems होंगे, because it reflects additionally on your profile. मतलब your website literally like shows कि ये हमारे value system है, ऐसे ऐसे हम लोगों को hire करते हैं, we make sure कि ये practices हम follow कर रहे हैं. When did that fall into place? So when we had to write all of these, or you can say frame all of these Yeah. pages, which is the value system, the company, contact, blah blah blah. So she was after my life that Agrima, you need to finish these. You need to finish these. I was like, okay, I will. And eventually, she was the one who sat down and started writing about all the things. Ki, Dude, you know what I realized by the end of it? I was like, I cannot write वो जो typical legal agreements होते हैं ना जो Yeah. employee को follow करना होता Yeah. है. I can't do that. Because employees are firstly actual people with actual feelings, and we don't have enough money to hire an HR. So we have to take care of it till the point of time we don't have one, right? So I only wrote things that we both have been taught by our parents. कि कैसे किससे बात करनी होती है, जात भात भेदभाव नहीं करना होता. आप किसी से अगर काम करा रहे हो तो आप उसे पैसा इक्वली उसके टाइम के लिए भी दोगे. इट्स लाइक अ वेरी बेसिक. मतलब मुझे हमेशा ये चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है कि जैसे फॉर एग्जांपल इतना सस्टेनेबिलिटी लोग कर रहे हैं, मुझे किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज पीपल आर डूइंग समथिंग. दैट्स ग्रेट. दैट्स इट. पीपल नीड टू डू समथिंग about whatever is happening. But बचपन से we live in India यार. हमारी माएँ थैलियाँ बचा बचा के रखती हैं घर में. टी शर्ट फट जाती है तो उसका पोछा बन जाता है. ये इतने नॉर्मल वैल्यू सिस्टम्स हैं जो मुझे ऐसा लगा कि यार हम इनको तो मिस आउट कर ही नहीं सकते ना. हम कर ही नहीं सकते. How do you miss them out? We've been taught that since forever. it's become very unconscious in your mind that Yeah. ki that is going to be. That is the normal life cycle of that T-shirt, whatever has come about. So I think that's where it actually drove through. And eventually, हाँ हमने कुछ चीजें खुद की भी add करी. Some things that we learnt here, certain things that we realized over our travels, over the period when we were not here. When we met some amazing people in Milan, what we learned through them. Also the fact that this is the one reason why I don't call myself ourselves. We don't call ourselves as a sustainable brand. क्योंकि यार human sustainability, material sustainability is a given. And sustainability की जो variations है ना, वो इतने wide spectrum में fall करते हैं कि आप literally भी sustainable हो सकते हो by just using color cotton and piece silk. And otherwise, because I love working with silk, and silk जो मलबरी सिल्क आती है, दैट इज थ्रू द वर्म्स. ऑलराइट, हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट यार हमारे प्रोसेस में. हम झूठ नहीं बोलते. वी डोंट लाई. क्या मिलेगा झूठ बोल के, है ना? हम काम करते हैं अगर मलबरी सिल्क के साथ तो हम करते हैं, बट वी मेक श्योर दैट जैसे मम्मी हर चीज़ बचा लेती थी. टेलर को कपड़ा दे के आई, अगर सिल्क की साड़ी का तो बचा हुआ बॉर्डर दे दो भैया, उसको बचा के रखेंगे, कहीं ब्लाउज में यूज कर लेंगे. तो वो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जो कॉन्शियसली हम रखते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप्रोच टुवर्ड्स पैचवर्क. Patchworking is super important for us. Well, the idea was that you want to do something which is going to regulate the process. Something which is developing certain kind of a waste should be reused in a certain way. Alright, so to get onto that cycle, we started using these techniques. So patchwork is one of them which very prominently holds a place. Because patchwork constantly हम बहुत ज़्यादा produce नहीं करते हैं. We are a
small scale production. Yeah. So whenever we are making something, we always have a certain amount which is left. So that is something that is being designed again in a certain way. And of course, textiles being the forte, we try to play along with it and finally develop something which gives a new beautiful design outcome. But that comes with a fact that it is one of a piece. It reminds me of your beautiful pouches. Yeah, the pouches. It Yes. started from the pouches and then it went on to the coasters, to the scrunchies. Now we're making shirts we're out of making it now. shirts now. Now we have different patchwork ideas all together. Yeah. Right. It's been like a journey है यार, मतलब process है एक तरीके से. आप enjoy नहीं करोगे process तो कुछ development नहीं होगा. And ultimately the conclusion of this particular point is that we call ourselves as conscious brand. Yeah. Consciously work करते हैं हम. हमारा कोई ये सीन या चक्कर नहीं है कि हम सिल्क नहीं यूज करेंगे या हम नायलॉन नहीं यूज करेंगे. नायलॉन भी यूज करेंगे अगर हमें बची हुई फैक्ट्री के अंदर वेस्ट मिल जाएगा नायलॉन का तो हम कर लेंगे. दे दो कचरा दे दो. हमारा काम डिजाइन करना है ना, तो हम कचरे से भी डिजाइन करके कुछ यूजेबल निकाल लेंगे. बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है यार ये चीज की डिजाइनिंग इज क्रिएटिव. डिजाइनिंग इज लॉजिकल. There's a design problem and solution to it. Yeah. And when she said that she can't design, and I immediately said no. She doesn't want to create, but she can understand design. So designers are not artists. Designers are not. There's a very fine line. Artists will work on the idea of making somebody feel something, and it's open-ended. Design will not be like that. You design something so people can use it. And it should hit the right target. कि भाई ये बटन ऐसे खुलेगा तो बस ऐसे ही खुलेगा. अब वो कोई भी प्रजाति का या कोई भी इंसान वो पैर से ही क्यों ना खोले, बटन वैसे ही खुलेगा. And that is the design. Subjective and objective. Exactly. It's very logical and practical. So मैंने इससे बहुत practicality सीखी है जिंदगी में. I think fashion designer नहीं थी मैं पहले. मैं फैशन आर्टिस्ट थी और मैंने बहुत आर्टिस्टिक पीसेस निकाले हैं. Many people have loved it and I'm so grateful. But मुझे eventually realize हुआ कि HeenaAgrima is not fashion art. We are fashion design, textile design, and ये मोहतरमा है जिनके reason से आज wherever I am. I In think terms so of that, design, yeah. like wherever I am, तो बहुत सारे लोगों का amalgamation है. It's like parents being on the top and then इसके parents हो गए, इसका भाई हो गया. Like there's so many people who have adding on to the experiences also जो तुमने experience exactly. इन लोगों की वजह से हम कुछ, मतलब इनकी वजह से ही हम कुछ हैं. नहीं तो हम कुछ नहीं होते. They only supported us. But the only thing is that the criticism that I have received from my partner, I am very grateful for that because it is a very constructive criticism. She is never biased. Suddenly this is becoming about how good Agrima is. Yeah. I think she's just trying to flatter me for the fact that I came. नहीं यार मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ. जब नाम सोचे थे तब HeenaAgrima क्यों सोचा? Oh my God. हमने बहुत सारे the house of this. हाँ क्या थे ये? I don't know. I don't even remember honestly. बहुत ही. So we were thinking of like something like where she comes from, like her roots, where I come from. So we also thought the house of Karigar was one of them. Yeah. Okay. And we really like the concept of how Karigars are the actual people who bring everything to reality. Right? उनके बिना ना नहीं है भाई कुछ भी नहीं है. If you guys are trying to become fashion designers, आपके कारीगर, आपके टेलर्स, आपके ये जो लोग हैं ना, ये इनकी वजह से आप हो, नहीं तो आप कुछ भी नहीं हो. And I love them. So अगर वो भी देखेंगे तो I love you. Anyhow. So the thing is कि हमने बहुत नाम सोचे, बहुत गूगल किया, अलग अलग कि इन चीज़ों को इस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ये वो नहीं हिट किया. मैंने कहा देख यार तू और मैं काम कर रहे हैं एंड ये बढ़िया चीज़ ही है कि हमें बचपन से साथ में काम करना है. ये ड्रीम कम ट्रू ही है.
काम करना ही ड्रीम कम ट्रू है। बाकी तो देखी जाएगी, अब ये कहाँ जाता है हमें नहीं पता। बट वी वर लाइक तो तेरा मेरा नाम रख लेते हैं यार। No, so that also came from the fact that हम लोग सोच रहे थे okay, because एक आप जब कोई कुछ start करते हो, so you have a certain thought in mind कि आप किसी से relate करते हो, आप कहीं एक level achieve करने का try करते हो. So the most prominent names that come to your mind when you think of fashion is, you tell me. Sabyasachi. It's the name. Designer. I would say okay, Gucci, Prada, Chanel, Everything Dior. is the name They're of all a designer. names. They're all their names, their कोई अगर identities. मुझसे कुछ खरीद रहा है तो मेरी Essence दुनिया का होना खरीद चाहिए, I रहा है, think. हाँ. मेरी क्रिएशन का खरीद रहा है। Yeah. कोई अगर इससे कुछ खरीद रहा है तो इसके लॉजिक का खरीद रहा है कि वो इतने ही फैब्रिक में क्यों बना है, ऐसा ही क्यों है। तो Yeah. फिर वी वर लाइक कि यार अपना ही नाम रख लो, क्यों? So I think that was the point ये where इसका पॉइंट था। the मेरा most दोस्ती था इसका एज यूजुअल लॉजिक Practical. the most sought out solution to it came to us कि अच्छा ठीक है यार खुद का नाम रखते हैं. I mean, why are we thinking so much about ये रख लें वो रख लें, नहीं समझ आ रहा है. So let's stick to our name. Let's make our identity and personality बस into लोगो this बनाया brand. एक दिन के अंदर। मैंने कहा अब नाम खुद का रख रहे हैं तो फिर सिग्नेचर भी खुद का होना चाहिए। मतलब दैट्स द आइडेंटिटी ऑफ अ Yeah. नेम, राइट? योर सिग्नेचर। Yeah. It also becomes a logical aspect when you sign a document. Yeah. Plus you can implement creativity in your signature because the unique factor, Yeah. right? The way our logo is the ideation of how we sign. ये जैसे साइन करती है और मैं जैसे साइन करती हूँ ना, उसका अमेलगमेशन था, क्योंकि वो हम दोनों की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं Yeah. apparently. And personality not like direct personality, creative and technicality, logic and fun together. Yeah. That is what HeenaAgrima I feel is about. In a very 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 simple language. Yeah. ऐसे तो कॉम्प्लिकेट करते करते कल तक भी नहीं पूरा कर पाएंगे। बट बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो क्रिएटिव एंड लॉजिक इज व्हाट वी आर। जब मैं क्रिएटिविटी भी देखती थी तो आई रिमेम्बर अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर स्टूडियो, मैं खो जाती थी इन योर डिजाइन्स और वहाँ जो चीजें हो रही होती है ना, इट्स जस्ट सो फैसिनेटिंग कि भाई यू नो मतलब व्हाट यू डूइंग इज बियॉन्ड अ लॉट ऑफ पीपल्स बार फॉर श्योर। तो उसको ग्रास्प करना है ना, ऐसा यार कुछ नहीं है, ऐसा है, मैं देखो थर्ड पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। ऐसा नहीं है, पता है दिस इज द रीजन व्हाई पोस्ट। सो इफ यू गो ऑन माय इंस्टाग्राम, हम बहुत ज्यादा अपने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं डालते। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि लोग प्रोसेस देखें, इंस्पायर हों। Yeah. सी बहुत सिंपल सा लॉजिक है मेरा, एंड इफ यू वांट इंडिया और आवर कम्युनिटी ऑफ डिजाइनर्स टू बड बेटर, they need to know that the ground level is not here. Yeah. It's here. The bar is high. yeah. And if they don't see it, they will not realize it. And the more transparent you are with them, तो मेरे क्या है, कंपटीशन हेल्दीली खुद भी बढ़ता है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन खुद से बढ़ती है, यार ये तो मैं डाल चुकी हूँ, हाँ. अब ये थोड़ी डालेंगे, अब तो Yeah, कुछ नया बनाएंगे। I think it's very simple. आप किसी भी बड़ी कोई ब्रांड का डिजाइन अगर देखते हो, so they are very open about it. उनके जो प्रोसेस वीडियोस होते हैं, उनकी कोई भी चीजें होती हैं, they very openly mention that this has taken 800 hours to develop. Yeah. So what is that? That is only to make the audience realize that this has taken so much of hard work. Yeah. So it so happened yesterday, मेरे को किसी ने Instagram पे ना मैसेज किया कि ना I really like your products, where can I buy? Can you please share the link? So I sent her the website. So she went on the website and just 5-10 minutes later she replied back is like, yeah, why is everything so costly on your website? And I was like, I think you came to us through our Instagram, so this place would show you why. Because all the process is visible there. All the work that we do from zero to the kind of product that you're seeing on the website is there. ये चीज क्या है, कस्टमर, मतलब मैं नहीं ऑफेंड करना चाहूंगी, आई लव माय कस्टमर्स एंड दे आर लाइक द बेस्ट कस्टमर एवर, बट
कस्टमर या कंज्यूमर का एक ही थॉट प्रोसेस होता है, यार ये मटेरियल तो इतने का मिलता है, तो ये इतना क्यों महंगा है। यार आप एक बार उसकी प्रोसेस की स्टेप्स देख लो ना, तो आपको लगेगा यार पैसे ही दे दो। मेरे को लगता है मेरा और अग्रिमा का थॉट प्रोसेस बहुत बदल गया है इस चीज में। फिर लाइक यार अपन वहां तक जाएंगे, मार्केट तक तेल लगाकर ये खरीद के लाएंगे, फिर उसको बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय क्लोथ्स, वो तो हमारा काम ही इन हाउस है, सो वो तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। और आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट कि आप कोई भी चीज, हमारा खरीदने का तरीका, नजरिया ही बदल गया। बिकॉज नाउ दैट व्हेन वी बाय थिंग्स वी आर लाइक भाई बेटर है किसी अच्छे वेंडर से खरीद लो, उसका भी बिजनेस को सपोर्ट हो जाएगा और हमारे भी वक्त बच जाएगा, क्योंकि वक्त इज मनी एंड मनी इज वक्त। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव टाइम। एंड ये जो एक एस्पेक्ट है ना, बिकॉज क्लाइंट ओनली सीज द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज व्हाई शोइंग द प्रोसेस इज सो इम्पोर्टेंट। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि इसमें कितने लोगों का मेहनत जा रहा है, एक ही कपड़ा, अब मैंने जो पहन रखा है वो एक ही कपड़ा 4 लोगों के हाथ में गया है। क्यों? डाइंग किसी और ने की थी, शिबोरी किसी और ने, मतलब पहले शिबोरी किसी 4 लोगों ने मिलके अलग अलग की है, 5 तरीके की तो शिबोरी हो रखी है। उसके बाद डाइंग किसी और ने की थी, कलर किसी और के थ्रू आया था, ठीक है, स्टिचिंग का कटिंग किसी ने किया था, वो नेचुरल डाई बनाने में भी जो तुमको टाइम लगा है मतलब, एंड कटिंग किसी ने किया, पैटर्न मेकिंग पहले हुई थी, उसके बाद कटिंग हुई है, फिट पहले तैयार हुआ था, तब जाके ये प्रोसेस आगे बढ़ा है। और फिर हमने डिजाइन किया था, उस पे पूरी मीटिंग बैठी थी इन डिजाइन्स पे कि भाई ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये बनाए या नहीं बनाए। So it's like very important to articulate the fact that you are not paying for the material cost. Yeah. Material is the least of the cost that you're paying. And Yeah, well, it is everything after that comes forward. It's the design, it's the conceptualization, the story and the brand value that you are wearing on. Many clients have told me, यार HeenaAgrima पहन के सच में ऐसा लगता है we've contributed to something conscious. Yeah. मेरे को किसी ने नहीं आके बोला कि हम sustainable है. It's because just a step. it's a step that they've taken because we make sure कि crafting इतनी अच्छी हो रही है कपड़े पे कि लोगों का मन करे यार उसको संभाल के रखने का। अगर एक नॉर्मल टी शर्ट जो ऐसे 200 रुपए की मिलती है, हम 2-3 बार से ज्यादा बार उसका ना ध्यान देना ना कम कर देते हैं, क्योंकि हमें ना उस चीज की इतनी वैल्यू नहीं होती। अगर मैं लोगों से पैसा ले रही हूँ, I want to make sure that what I am taking, I'm giving it through my creativity, her analysis, the team's work, and whatever is happening on that cloth is a piece of art at the end of the day. That is an art, not the variability. That is of course not art, but design. So yeah, and that's very important. Yeah, ये चीज़ बहुत important है. There are a couple of other aspects on your, मतलब how you sell your creativity and your art. एक तो workshop हो गया, that becomes your skill sharing. एक हो गया all your clothing, your garments, and a couple of supplies that you sell online. How, मतलब एक तो online offline workshops, इन सब का on a scale of sales और कैसा रिस्पॉन्स आते हैं, एंड यू हैव रिसेंटली बीन ट्राइंग अ लॉट ऑफ एग्जीबिशंस जिससे आई पर्सनली नो यू हैव गॉटन अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, बट हाउ कम सेल्स ऑफ सच कॉन्शियस प्रोडक्ट्स और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एंड सस्टेनेबिलिटी इज अ न्यू थिंग यार, मतलब आफ्टर ज़ारा तो सब बावले हो रखे हैं एंड एवरीवन इज रेडी टू पे इवन मोर, क्योंकि वो इस ब्रांड को दे रहे हैं, तो इट बिल्ड्स दैट इकोसिस्टम। अगर 2 ब्रांड्स को सस्टेनेबिलिटी की वजह से they are making people understand कि okay, this is a thing and this is important, it's helping the whole ecosystem altogether, and Zara is no like less. तो क्या मतलब how do you ensure कि ये sell कैसे हो रहा है ये products, differentiation and online offline exhibits? एक तो to tell people that we exist helps a lot. I think it's a whole system, I would say, because ये सारी चीजें क्या है, एक लिंक से बनी थी। सबसे पहले हमने वर्कशॉप स्टार्ट की, अब वर्कशॉप करे तो उस पॉइंट पे क्लाइंट की एक डिमांड आई कि यू नो यू आर द वंस हु आर टीचिंग अस,
So what kind of products are you using? We'd like to use that. So उस चीज से supply store build हुआ. The supply store got built up, and then we were like, okay, the long term plan was that we're going to land up in fashion. So last year when we started with the fashion line, तो gradually उसको भी हम place करते गए, because the technique that we were teaching and sharing is the same that we are using to develop our clothing. Eventually उसके आगे गए तो लोगों की कुछ और demands आती गई. They're like, you know, we'd like to come and try your clothes. We don't want to just see them and order, because we don't know what the quality is, how it appears. Then we started with exhibits. तो वो एक step करके, I think demand. You kept taking in the client feedback. Exactly, that demand was something which was very crucial. Demand also came in very building. organically. Yeah, because And we don't run ads also. I think before a certain period of time तुमने कभी ads भी नहीं चलाए थे. हम अभी भी नहीं चला रहे, हमने फिर बंद कर दिया. अच्छा. At the moment I'm not running ads because so what happened? हमने एग्जीबिशन की, हमने एंटिसिपेट नहीं किया कि इतने ऑर्डर आ जाएंगे. अब हमारी पूरी टीम व्यस्त हो गई, अब टीम की किल्लत पड़ गई कि भाई अब और लोग कहाँ से लाए, मिल नहीं रहे लोग. एक तो लोग ढूंढना बहुत हेक्टिक टास्क होता है, And especially for a craft like yours, जब तुम्हें बनाना have to होता है train और also. train also. so finding people was a task. मैंने ऐड ही रन करने बंद कर दिए. मैंने कहा छोड़ो यार, अभी थोड़ा ना टीम को भी सांस लेने देते हैं. एंड आई थिंक यही है जो डिफरेंस एक स्लो फैशन और एक फास्ट फैशन में होता है. इट्स नॉट द पेस दैट यू कीप अप विद, इट्स वेयर यू हैव टू स्टॉप. यू शुड नो. ये मैंने वहाँ सीखा. मैंने कहा नहीं, मेरी टीम पे बहुत प्रेशर आ जाएगा अगर हम और ऑर्डर्स लेंगे. हमारी नहीं है अगर इतनी बड़ी टीम, यही अगर हमारी हैसियत है तो हम उतने ही पैर फैलाएंगे जितनी चादर है. ऐसे नहीं है कि बस चादर से पैर बाहर निकले. of course, I mean, it gives you a scope and tells you that okay, now is the time To that you should expand and grow. बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप टीम को प्रेशराइज कर दो एक्सपेंशन में. आप एक्सपैंड करो फिर और आप उस पे वर्क करते रहो, बट आप उसको बैलेंस आउट करो कि अच्छा वील टेक ऑर्डर्स, बट अब हम हफ्ते में इतने ही ऑर्डर्स ले पाएंगे. हम इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे. आप क्लाइंट के कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाओगे. आप अपने स्टाफ को बहुत ओवरवर्क कर दोगे, वो आगे का काम ढंग से नहीं कर पाएगा. ठीक है. डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उस चीज से, क्योंकि पूरा तो कंपनी आपका ऑर्डर पैक करने में लगा हुआ है. एक अकेला डिजाइनर क्या करेगा, राइट? ये बहुत व्यस्त हो जाती है उस चीज में, बिकॉज एवरी साइजिंग वी आर क्यूरेटिंग पर्सनली कि भाई इसका ये साइज है, ये वी ऑफर दैट सर्विस दैट you can customize the size. So I mean, even if there are minor changes, we need to cater to that. We need to keep that quality at a uniform level. So that is very important. Plus, anyhow, natural dyeing and working with nature is at a certain stage जहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है. आपको बहुत ज्यादा कमिटमेंटली ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे केला अगर आपने नहीं खाया 5 दिन में तो वो काला पड़ जाएगा, राइट? यू कैन कंट्रोल नेचर लाइक दैट. सो नेचर इज एवर ग्रोइंग, एवर इवॉल्विंग, एवर चेंजिंग. सो व्हेन वी वर्क विद नेचर वी कांट स्टॉप इट, बट वी कैन प्रिजर्व इट. एंड वी हैव टू थिंक कि यार अगर अभी नहीं किया ना तो ये डाई सड़ जाएगी. अगर अभी नहीं करा ये वाली चीज इस सीजन में नहीं हुई तो फिर अब वो सीजन चला जाएगा, ये कलर ही नहीं आएगा. हम सीजन के अकॉर्डिंग कलर थ्योरी बनाते हैं, इसीलिए कलेक्शंस छोटे होते हैं. फिर कभी कलर रिपीट नहीं होता. मतलब रिपीटेबिलिटी है कलर्स की, बट हम नहीं करते क्योंकि वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. तो मैं लाइक कि भाई नए सीजन में नया पहनो ना, पुराना क्यों पहनो. दिस इज लाइक some little things you have to keep in mind. And I think overload जब हुए हम तब हमने realize किया कि हम इंसान हैं. Just take a step back. Just relax 2 मिनट के लिए. Please take a pause for a cause and let everyone breathe. अब जो होगा देखा जाएगा. हमारे केस में ये बहुत होता है, अब जो होगी देखी जाएगी, क्योंकि नेचर के साथ डील कर रहे हैं ना. You can't. You have to give that ease. You have to give that ease. और मेरे को वो चीज अच्छी भी लगने लग गई है. पहले नहीं लगती थी क्योंकि हम इतने ज्यादा स्टीरियोटाइप्ड है कि कपड़ा ऐसा ही होना चाहिए, ये स्टिच लाइन यही होनी चाहिए. क्योंकि हम ज़ारा H&M के क्लोथ्स को देख के इतने ज्यादा
सैचुरेट हो चुके हैं वो परफेक्शन से, नहीं होता है वो परफेक्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वो नहीं होते हैं परफेक्ट, क्योंकि वो भी हाथों से ही बनाए गए हैं, किसी इंसान ने ही बनाया है और हमारे एशिया में ही बनाया है। सो बहुत मतलब it's like they just pretend to be perfect. Nothing is perfect actually. कुछ perfect होता नहीं है. It's a very big myth. तुम्हारे काफी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हाउ कैन पीपल यूज इट? मैंने जब वो वेबसाइट का वो सेक्शन खोला था तो आई गॉट वेरी कंफ्यूज्ड. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर मोर अवेयर देन मी कैन यूज इट फॉर देयर बेनिफिट, बट मतलब वो दो सल्फेट्स एंड they are particularly for people who do the workshops. Yes. do the workshops. Okay. So that is why it's called the supply store, because those supplies are specific to people who want to either learn this or who want to be who are already doing it, who are already doing it. Right. So it's like an area or a space where they can come easily get like small quantities that they can experiment with. Otherwise these kind of products are something जो आप मार्केट में लेने जाओ, then they are only available in bulk. Otherwise are very expensive. Also the fact that जैसे there is a website called Meva, Maiva, many people call it different अलग-अलग pronunciation है. But it's a Canadian website for these two wonderful ladies, Sophina and her mother, who have been working with natural dyes for the past, I don't know, many years now. Yeah, Her mother started I think the since the 1980s they've been into this. Wow. And we saw their online supply store and we got very inspired from that. We were like, यार हम इंडिया में होके ये ऑर्डर नहीं कर सकते, शिपिंग कितनी महंगी है. So we were like, the idea of design is this only. अगर हमें प्रमोट करना है नेचुरल डाई को, तो the true promotion can only happen when you give out the material also. अगर हम वही अपने पास रख लेंगे छुपा के कि हम बताएंगे तो सही कैसे करना है, but you have to struggle to find it. Then there is no fun in doing it. अगर आसानी, अवेलेबिलिटी, सुविधा होती है किसी के पास, तो उसका मन चाहता है वो करना. मजबूरी नहीं होती फिर, और मजबूरी में कोई काम अच्छा नहीं होता. अगर आपको कुछ सीखना है तो आप मजबूरी से नहीं सीख सकते वो काम. मतलब मजबूरियाँ बहुत कुछ सिखाती है, ऐसी बात नहीं. काफी मजबूरियों में मैंने बहुत चीजें सीखी. Heena sentimental हो जाएगी. But मजबूरी और सीखने से याद आया, आपका क्रिएटिव प्रोसेस कैसा होता है? How is your love with question your of the year, farm dude. blooming? This is the question of the year. I think I would not even say anything to it because मैंने एक फोटोग्राफर को डरा दिया था अपना प्रोसेस बता. Yeah, I mean, I was just telling Heena that he does not care. I am sorry. Please let him be. So, creative process कहाँ से चालू होता है? चालू होता है from childhood. इतनी लंबी इंटरव्यू नहीं है. I swear, I was just going to say that. Yes. So the memories of childhood, and I was very attached with my grandmom. We did a lot of gardening together. That was my peaceful time with her. Yeah. गार्डनिंग से बहुत लगाव है बिकॉज वही टाइम था जहाँ मैं पापा से भी कनेक्ट की हूँ, मम्मी से भी की हूँ और मेरी नानी से भी की. Sweetly enough, हमारा लास्ट पॉडकास्ट पौधा घर के फाउंडर के साथ था and we spoke a lot about planting and gardening. Oh, nice. Yeah. So that, और शुरू से ही मम्मा ने बहुत ज़्यादा emphasize करा है to have plants, to have flowers को कैसे फ्लावर अरेंजमेंट कैसे करते हैं, हैड क्लासेस एंड ऑल ऑफ दैट. तो नेचर की तरफ इंक्लिनेशन हमेशा से बचपन से रहा है, क्योंकि घर में सब नेचर ओरिएंटेड है. ठीक है. एंड लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्टेड, बिकॉज माय डैड इज एन एक्सपोर्टर, तो उनका मैंने काम बहुत डेप्थ में देखा है कि कहाँ क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं. ओके. तो मैं थोड़ी सी घबरा जाती हूँ वो काम देख के, मैं ओवरवेल्म हो जाती हूँ उस काम में. मुझे लगता है एक ही पीस लाखों की क्वांटिटी में बन ही जा रहा है, बस हम यही देखे जा रहे हैं. नेचर में एक पत्ती भी सेम नहीं होती है और यहाँ पे लाखों पीसेस सेम. मैं नहीं अग्री कर सकती उस चीज से. मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें बंद करके छोड़ देना चाहिए या ये गलत है या सही है. गलत सही पाप पुण्य आपका खुद का डिसाइड करने का होता है. आई कांट टेल एनीबॉडी व्हाट टू डू. व्हाट आई कैन डू इज व्हाट आई डिसाइड. सो
when I started sketching in Milan, मैंने वहाँ पे डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपना स्टाइल ऑफ इलस्ट्रेशन डेवलप करना है, नो मैटर व्हाट. मैं नहीं ले सकती Pinterest से इमेजेस और मैं उनको नहीं डाल सकती अपने कपड़ों पे, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है. मैं नहीं रिलेट कर पा रही यार, उस चीज से लगाव नहीं कर पा रही मैं. वो लगाव, बिकॉज आई लव लविंग थिंग्स. मेरे हर कलेक्शन में हार्ट्स होंगे. रैंडमली मैं कहीं पे भी दिल डाल दूंगी. मैं अग्रिमा को बोलती हूँ यार ये बन गई शर्ट, इसमें ना यहाँ पीछे एक दिल डाल देते हैं. लुक एट मी लाइक क्यों? नहीं, बस टोकन ऑफ लव यार. कोई देखेगा तो खुश होगा. इट्स अ यूनिवर्सल सिंबल ऑफ लव, राइट? सो I love the fact that humans have the power to love and express. Okay, that is one very big inspiration. And उसके बाद तो बस rest is history. I started creating sketches and stuff. अपने आप वो चीज़ बहुत सारी childhood memories से associated है. ठीक है, कहाँ से कलर थ्योरी आती है वो भी childhood से associated है. हमारी friendship से बहुत सारी चीज़ें associated होती हैं, because it bloomed this whole thing. So the idea of blooming is a very big inspiration while I draw flowers. Okay, then Jaipur and Milan ka amalgamation. So colors come from Milan and Jaipur also. A lot of colors we work with is something that you'll find in Jaipur or Milan. Okay, ऐसे ही थोड़े से ग्रे के साथ पिंक होगा. रानी पिंक जो जयपुर में आप लहरिया और बांधनी में देखोगे, और ग्रे मिलान में बहुत लोग, because it's like a high fashion place where people make fashion. So nobody is dressed in fashion because they're dressing people in fashion. So everyone is dressed very professionally. There's a lot of suits and sartorial outfits that are happening over there, right? And बहुत high professional look होता था मिलान में. So उसका inspiration लेके we added the utility part. कि सिर्फ इंडियन एलिमेंट्स नहीं, यूटिलिटी होनी ज़रूरी है. कि अगर हम इंडियनाइज कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उसमें कंटेम्प्रेरी लुक इज़ अ वेरी वाइड कैटेगरी. कि ये कंटेम्प्रेरी इंडियन फैशन डिज़ाइनर्स हैं, वो तो हम हैं ही, वो तो कैटेगरी है हमारी. पर उसमें भी क्या है, थोड़ा सा हमारा ना स्टर्डी लुक आता है. वो आता है बिकॉज वी ट्रैवल्ड अ लॉट. वी नो द नीड एंड द पावर ऑफ क्लोथिंग दैट कैन help you carry yourself better plus carry your stuff better. कि आपको ईज होनी चाहिए यार. इस कपड़े में मैं खाने भी जा सकती हूँ, काम पे भी जा सकती हूँ, किसी से मिलने भी जा सकती हूँ, एंड एट द सेम टाइम इफ आई वॉक आउट ऑन द स्ट्रीट मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें. ईज, फिट, एवरीथिंग. सो इंस्पिरेशंस हैव ऑल कम फ्रॉम माय सराउंडिंग्स एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इवेंचुअली. सो या दैट्स इट. क्रिएटिव प्रोसेस फटाफट कर लिया. प्रोसेस का आंसर नहीं दिया अभी. यही तो क्रिएटिव प्रोसेस है. लाइक द प्रैक्टिकल, यार प्रैक्टिकल प्रोसेस में तो सी एवरीथिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्केचेस दैट आई डू. स्केचेस आर द बेस बिकॉज आई डोंट यूज Pinterest. मैंने खुद का ही एक Pinterest बोर्ड बनाना चालू कर दिया था 2 साल पहले, और अब मेरे पास इतना सारा सामान है कि मुझे Pinterest नहीं देखना पड़ता. फिर क्या बोलूं मैं, देखा so this one. तो so we start with board making. That's very important. हम लोग mood board, inspiration board, color board, fabric trim, detail board, सबके boards होते हैं. Whatever like elements that we have in the clothing in that particular collection. उसके बाद we try to do the fittings. Fittings are very important. Sketching in the meanwhile जब ये boards बन रहे होते हैं, so whatever we are feeling at the moment, we will sketch accordingly, according to the weather. Everything is done very practically. No, but I think jokes apart, like her creative process is something which actually it is very primary. Like it doesn't require a secondary source to go to and then look for and I think that is what people have loved me for, the amount of love we have received over the embroideries that we do. Yeah, because there's something that people look at and they're like, okay, this is not something that we usually see. तो एक वो वाला फैक्टर उसका ना USP बन जाता है. And eventually people end up asking for more and more different variations towards it, etc. So that thing has been a very
you can say a plus point for the creative side, and in general because like of course because she's very high on emotions and values. So whenever she's sketching, you know, वो चीज automatically फिर उस sketch में या उस design में visible होती है. It reflects. बहुत डिजाइन्स तो ऐसे होते हैं कि ये शर्ट बना के ले आते हैं और बोलते हैं मैम चलो आप ड्राइंग बना दो. And I love that. That spontaneity is always there. People, the first shirt that we ever made for HeenaAgrima, I'll share a picture with you if you want to. Yeah. उस शर्ट वो आज तक खत्म नहीं हुई है शर्ट, क्योंकि उस पे हर बार जब हम नया कलेक्शन बनाते हैं ना, हर बार उस पे एक नया क्राफ्ट ऐड ऑन होता है. जब पहली बार बनाया था तब मैंने मेरा आर्ट वर्क बनाया था कांथा से, फिर हमने टिपिकल कांथा किया, फिर हमने उसके ऊपर मुकेश किया. नाउ वी आर एडिंग कांच वर्क टू इट एंड पीपल हैव कम, पीपल सी दैट इट्स अ सैंपल पीस, उस पे निशान है, उस पे मशीन के स्टिचेस है. पीपल आर लाइक ये वाला दे दो, ये वाला दे दो. मैंने कहा ये तो मैं नहीं दूंगी, ये सेल के लिए. देयर आर सो मेनी पीसेस इन माय कलेक्शन व्हिच आर नॉट फॉर सेल एंड शी लुक एट मी लाइक यू नो, I can't do this. No, I tell her यार तू रहने दे, मैं तो बेच दूंगी. If she does that, she knows that it's gonna be. जैसे next time हीना दिल्ली जाती है, profits हवा दे लौटेंगे. मैं जा रही हूँ फिर. Bye. If you sell that one. हाँ, और samples बन जाएंगे. वो नहीं बनेगा यार. वो मैंने डाई किया था, इसने कटिंग की थी, हमने मिलके स्टिच किया था. भाई वो तो तुम ऐसे ऑक्शन पे दे सकते हो. वो भी नहीं देगी, उसमें भी खुद ही अपना बार ऊपर करके खड़ी हो जाएगी कि मैं खरीदूंगी. मेरे को लोग पूछते हैं कि तू करेगी क्या इसका, चल तू रख ले. But what are you gonna do? At least people who will buy it will wear it. You are not even wearing it. Either wear it. हम देख नहीं, मैं मेरा म्यूजियम बनाऊंगी HeenaAgrima का, उसमें मैं सब कुछ रखूंगी. मैंने लिटरली आई एम लाइक अ होर्डर डूड. मैंने ये जो हम लोगों ने पहले आइडिएशंस किए थे ना स्टूडियो के, उनके पेजेस संभाल के रख रखे हैं. जो हमने पहली बार HeenaAgrima का लोगो का स्केचिंग किया था वो संभाल के रख रखा है. Everything is so intact. The first flowers that I made for HeenaAgrima, that paper is still with me. मैंने बहुत मतलब डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है यार, और अपने काम को आप खुद ही वैल्यू दे सकते हो, तब जाके वो वैल्यूएबल होता है. आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सके कि हम अच्छा कर रहे हैं और हमें कोई आके वैल्यू दे देगा. नहीं, यू सेट योर ओन स्टैंडर्ड. So that is very important. I think that's more or less of what HeenaAgrima has been, how it formed, how we decided to start with it, process, journey, अब क्या हो रहा है, and this constantly. Annoying Agrima is one of my biggest inspirations. Yeah. Thank you for coming, Agrima. Thank you so much guys. मैं आउटरो कर देती हूँ. इसको बहुत मजा आया. मैं हर बार जब तुमसे मिलती हूँ मुझे कुछ सीखने को मिलता है, और इस बार तो मतलब जो इंटेंशन था वो सीखने का ही था, तो काफी कुछ सिखाया आपने हमें, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को भी, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ बहुत सारी गारमेंट्स और इनकी ब्रांड्स को देख के. बट द फैक्ट एंड F&B एंड गारमेंट्स, दीज आर द टू बिजनेस जो बहुत ज़्यादा ही होते हैं. तो बट द फैक्ट दैट यू आर डूइंग समथिंग वेरी वेरी एक्सक्लूसिव एंड द मतलब इट्स ऑल अबाउट द वैल्यूज दैट यू पुट बिहाइंड इट. मेरे को तो ये समझ में आती है इन अ बिजनेस एंड योर विजन, बट यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इंटैक्ट. मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि मैंने अभी तक HeenaAgrima को इसलिए नहीं बुलाया था, इवन दो दे आर वेरी क्लोज टू मी, because I was intimidated. I wanted to be in a sorted space ki okay, now if you come I can handle you guys. Oh my god, Agrima. हाँ, तो मतलब वो दिन आज हो गया है. Thank you. Finally. Guys, put your hello. Hi guys. I'm trying. Sorry. Don't do this. Not safe for work or cars. Yes. Or while driving.